Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. Well, you can call us on our telephone numbers, that is 2331 4444, 2371-7106 and 2371-7117. But do not forget to prefix 011, the code, if you are calling from out of Delhi. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में हम ताज़ा आर्थिक समाचार आप तक लाए हैं। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी या विशेष स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106। हमारा तीसरा नंबर है 23717117 और हमारे साथ सवालों का जवाब देने और चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस के साथ में निशित कुमार। The headlines: domestic stocks rise more than 0.5% amid positive global cues. Sensex closes above 58,800 points. Nifty reclaims the 17,500 mark. Rupee weakens 41 paise against the US dollar, and Brent crude price declined multi-month low to hover around $94 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में वैश्विक शेयर बाजार के मिले जुले रुख के बीच 0.5% से अधिक की बढ़त। सेंसेक्स 58,800 अंक के ऊपर और निफ्टी ने 17,500 अंक के स्तर के पार कर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 41 पैसे कमजोर और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $94 प्रति बैरल के आसपास। वैश्विक शेयर बाजारों के मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में 0.5% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स 58,800 के स्तर के ऊपर आकर रुका। निफ्टी 17,500 अंक के स्तर से ऊपर जाकर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में आज 465 अंक यानी कि 0.8% की वृद्धि के साथ 58,853 पर आकर रुका। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 128 अंक यानी 0.73% की बढ़ोतरी के साथ 17,525 पर बंद हुआ। विस्तृत बाजार में बीएसई मिड कैप सूचकांक आज 0.31% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.28% की वृद्धि हुई। The Sensex and the Nifty today climbed more than 0.5%. Both stock indices gained amid mixed cues from the global share markets. The Sensex finished above 58,800 points, while the Nifty settled above the 17,500 mark. The Sensex rose 465 points or 0.8% to finish at 58,853. The Nifty also gained 128 points or 0.73% to end at 17,525. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap rose 0.31%, while the small-cap index added 0.28%. In the Sensex Pack, 20 companies posted gains, while 10 logged losses. Mahindra & Mahindra was the top gainer as it climbed 3.1%, followed by Bajaj Finserv, which gained 3%. HDFC Bank and Axis Bank both rose 2.4% each. On the other hand, SBI tumbled 2%, Ultratech Cement declined 1.6% and Nestle India fell 1.2%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all sectors gained except oil and gas, which ended almost flat. Capital Goods Index gained the most as it climbed 2%. Power Sector Index gained 1.9% and the Utilities Sector climbed 1.6%. The overall breadth of the Bombay Stock Exchange trade was positive as shares of 1,894 companies gained, while 1,613 fell. Shares of 163 companies remained unchanged.
and we are joined in by our first caller, KK Sehgal from Siliguri. Hello. Hello. Mr. Sehgal, can you hear us? I can. Yes, please. I am a senior citizen. Okay, sir. Yesterday there was a program about senior citizens, and a mention was there about some pension scheme of PM Vyaya Yojana. Can you throw some light on it as to? Okay, sir. For senior citizen, actually, schemes are there from state government also, and central government also gives some pension to the senior citizen. So within the social welfare department, you can find out the more detail on the scheme. He was probably asking about the Prime Minister's scheme, which has come up. PM Vyaya Vandana Yojana. Yes. This is the scheme which has been incorporated probably recently, and this is mostly for the senior citizens, I think. Anyways, so Mr. Sehgal, I think you can have more information about the scheme on the internet if you have access to that, and probably it was launched in the year 2017. Yes. Yeah, May 2017. Well, Harveerji, we see today that the Sensex, the markets generally they are kind of showing these green shoots of late, which is quite surprising because of the repo rate which was increased by 50 basis points last Friday, and it was anticipated that it would nosedive a bit, but yet we see that it's shooting up. So what do you see in it? Yes, that was the anticipation that market may react negatively on this policy rate increase, but I think it was more and more already obvious to the market that due to inflationary pressure there will be increase in policy rate, and I think market already discounted this increase, so that's why there is no negative impact on the market due to this policy rate increase of 50 basis point. And in fact now with all the three increase since May till the last week, already 1.4% increase already happened on the policy. Since May, I think. Yes, policy rate. Yeah. But at the same time, when basically more inflow from the foreign investors in Indian market is giving a cushion to the market to absorb all this, and maybe investors also seeing I think better return in the market to enter at this time. That's why we have seen very positive thing in the market, and globally also market remain mixed with these things, and even some indication of recession to happen in the economy of US and some European countries. But latest data from US, particularly job data, was robust, so that now it is not, the certainty has come down a little bit. So we have to see in the coming days, so that those investors and foreign investors and even retail investors, so everybody is seeing opportunity in the market. That's why we have seen the numbers today. Well, talking of inflation, Harveerji, since May it has been kind of on the rise, but the latest figures, it says that it has cooled down a bit, especially the food inflation, the CPI inflation. So do you feel that with the cooling down of inflation furthermore in the coming times, this increase of in the repo rate in the coming, let's say the next, I think the MPC is scheduled for 30th of September or so. So do you see any further increase in the rates in the coming in the next cycle? You see that overall inflation, RBI is seeing at 6.7% for the overall whole current fiscal, and also seeing that there is moderation in the inflation rate, and in the last quarter the rate anticipated by RBI is 5.8%. It shows that there is some indication that inflation will soften up in the coming days, and like the globally crude prices are coming down, and food prices are also coming down. If you see
edible oil and pulses prices are coming down. Even globally, wheat prices are down. FAO food index, there is a big correction in 1 month. In that, it has already peaked out. So it looks like that if food inflation will not be on the higher side, it will come on the lower side. So it will reduce the pressure on inflation. So it looks like that I think that a peak is over for inflation. Inflation will come down. और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ में भरत भूषण जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार भरत जी, आपका स्वागत है, प्रश्न पूछिए। जी हरवीर सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा ये प्रश्न है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास फॉरेक्स रिजर्व जो रहता है, हम सुनते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व हमारा बहुत बढ़ गया, इतना अरब डॉलर हो गया, तो इससे क्या सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है या इसका इस्तेमाल देश हित में भी कुछ होता है? सर दूसरा सवाल सर, डेरिवेटिव से पूछ सकता हूँ सर? सॉरी, फिर से डेरिवेटिव से पूछ सकता हूँ, ओपन इंटरेस्ट वाला? आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर समय रहेगा तो हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर, ओपन इंटरेस्ट में बढ़ना और घटना ये कैसे फायदेकारक होता है, या कैसे हम अंदाजा लगाएं कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है? धन्यवाद। ओके, वक्त रहेगा तो हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। हरवीर जी वाज टॉकिंग अबाउट द फॉरेक्स रिजर्व्स। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व तो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव होता है, और जाहिर सी बात है कि हम जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, उसका जो इंपोर्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास फॉरेन करेंसी की, पर्टिकुलरली डॉलर्स में फॉरेक्स रिजर्व को कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास अगर बेहतर रिजर्व कंडीशन है तो ये हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर प्रेशर कम होता है, बिकॉज सफिशिएंट डॉलर्स आर इन सप्लाई, जो डिमांड मार्केट में आती है। तो इसलिए, और एक तरीके का एक एश्योरेंस भी होता है कि इकोनॉमी इज इन बेटर कंडीशन। अभी हमने कुछ नेबरिंग कंट्रीज का हालत देखी है, हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है। हमने 1991 में हमारे पास, हम भी क्राइसिस में थे जब सिर्फ 15 डेज का हमारे पास रिजर्व था। सो वहां से चल के हम लोग $600 बिलियन को पार करके गए फॉरेक्स रिजर्व का। अभी थोड़ा सा $600 बिलियन से कम है, बट अभी हम लोगों के पास सफिशिएंट है। तो इसलिए जैसे आपने कहा कि क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल का ये होता है कि करेंसी की स्टेबिलिटी के लिए पहला स्टेप होता है इस्तेमाल करना। अगर मान लिया रुपये के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है तो उस वक्त आरबीआई मार्केट में इंटरवीन करता है, डॉलर बेच करके डॉलर सप्लाई बढ़ाता है। तो इसी तरह होता है इसमें, और जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होना बेहतर एक स्थिति है। Indeed, as you mentioned, 1991, that was an epoch-making time at the time, and rightly you said that the 15 days of forex reserves was, we were in literal, literal trouble. And of course, one more thing we would like to add here is that you mentioned about Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, and all the neighboring countries. So the BOP, that is the balance of payment thing, that is the thing which has to be looked into when we talk about the forex reserves. So that is, it has always to be in the positive side, so as to present a positive picture, a healthy picture of the Indian economy. Well, our next caller is Ravi Narayan from Bhilai. Ravi, welcome to the show. Good evening. Actually, good evening. I don't have any question, but just a while ago, one caller, senior citizen caller, had inquired about Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana. Actually, it is a scheme parallel to the senior citizen scheme, which is run by banks, no? Up to 15 lakhs one can deposit. But in addition to that, in 2016 most probably, Modi ji, our PM, introduced this Yojana, under which also additionally you can invest 15 lakh rupees. Okay. And it fetches a higher rate of interest. I think presently it is at, I think 7.2 or something, I don't remember exactly. Yes, it is basically, you have to deposit up to certain amount, or maybe 15 lakh or so, the limit, and you get the senior citizen interest rate basically, which is 0.5% higher than the normal other in this depositors, for the benefit of senior citizen to get them more money as interest income. And also, Ravi, just to make a small correction, it was launched in the year 2017 and not 16. Well, anyways, thank you so much, Ravi, for giving out this information, and we are really thankful for that. Our next caller is Atanu Shah from Kolkata. Atanu. Namaskar. Sir, namaskar. Sir, good evening. Sir, my first question, we are proud of our Bharat. And sir, my first question is how biomass energy take place of Indian village in a small scale system.
My second question, what is carbon credit and carbon market by Kyoto Protocol? Is it beneficiary to us, mainly for Indian? Thank you. Basically, biomass is definitely, you can convert biomass into energy. You can create bio-CNG, you can use as a fuel. So there are multiple ways to use biomass. Can convert, as I said, into CNG also, bio-CNG. Some technology is available, but you need a scale for that and the investment to put up a plant for that. So even there are some waste from where you can produce bioethanol also from some waste. It is also there. As you said, that definitely carbon credit, if you are basically a carbon positive, so there is a market now, so you can sell the credit and can make money out of that. So these kind of markets are coming into being, but it will take some time. Definitely it is carbon credit thing is available now in the world, and we also can see it here, or some companies who are carbon positive, basically agro-based industries also, so they are taking benefit of that. और थाने से हमारे रेगुलर कॉलर हैं गुरुनाथ. हेलो. हाँ जी सर, नमस्कार. जी नमस्कार, आपका प्रश्न पूछिए. जी हरीश सिंह जी को भी नमस्कार. जी नमस्कार. सर मेरा क्वेश्चन था अपने करेंसी के बारे में. सर ये जो गवर्नमेंट RBI जो प्रिंट करते हो, मतलब हमारे देश की क्या एसेट को क्या देखा जाता है, मतलब कितने प्रिंट करने चाहिए, गोल्ड को देखा जाता है और कौन से एसेट को देखा जाता है? और सर दूसरा तो सवाल मेरा ये है, जो फेक करेंसी सर, एक ऐसा लोगों ने कुछ बिजनेस ही बना दिया है, इतने सारे फेक करेंसी छापे जाते हैं, और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी के वजह से ये जो नोट आती है, ये असली कौन सी और नकली कौन सी, ये भी समझ में आम आदमी तो नहीं पहचान सकता है. तो RBI या गवर्नमेंट इसके लिए क्या कदम उठाएगी, और हमारे इकोनॉमी ऐसे जो करेंसी फेक करेंसी आती है, और क्या इम्पैक्ट पड़ता है? थैंक यू. देखिए, जहां तक आपने प्रिंटिंग का कहा, ऐसा कोई अब कोई एसेट्स उस तरह से गोल्ड या उसमें तो नहीं अब होता है. ये RBI देखता है कि कब किस तरीके से करें. जो गवर्नमेंट का बॉन्ड्स इशू होते हैं या बोरोइंग्स होती है, वो सब के बीच में एक फॉर्मूला देखते हैं कि किस तरीके से कुछ अगर एडिशनल करेंसी का रिक्वायरमेंट है या नहीं है. अदरवाइज इस तरह से ओपन एंडेड नहीं है कि कुछ भी करेंसी आप छाप लेंगे, बिकॉज इट इज इन्फ्लेशनरी एंड इट इज नॉट ए गुड इकोनॉमिक्स फॉर द इकोनॉमी. आपने फेक का कहा. देखिए, RBI लगातार इसके ऊपर कैंपेन चलाता है. अभी पीछे जब डिमोनेटाइजेशन होने के बाद नई करेंसी आई, उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं, और उसका मकसद भी था कि किस तरीके से वीड आउट करें जो इस तरीके का फेक करेंसी है, बिकॉज ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, और कॉमन मैन भी उसका नुकसान उठाता है कई बार. बट लगातार अगर आप देखेंगे कि ये RBI का कैंपेन होता है, अगर आप जाएंगे तो आप विजुअली भी, एक ऑडियो विजुअल भी वो उस तरीके का प्रेजेंटेशन देते हैं कि आपको जो जेन्युइन करेंसी है उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर है जिसको अगर आप देखेंगे तो आप फेक करेंसी के और जो जेन्युइन है उसके बीच में अंतर कर पाएंगे. थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है और बहुत आसान तरीके से समझाया जाता है. इसके लिए थोड़ा ये बात भी सही है कि और बहुत ज्यादा अवेयरनेस होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस होती हैं कई बार आदमी उस तरह ध्यान नहीं दे पाता, और इसीलिए इस तरह के लोग इसका मिसयूज भी कर पाते हैं. बट डेफिनेटली देयर इज कंटिन्यूअस कैंपेन, और अगर आप जाएंगे RBI की वेबसाइट पे भी, और बैंक्स में भी ये बताया जाता है, और अखबारों में बहुत सारा विज्ञापन दे करके भी बार बार ये कैंपेन चलाया जाता है कि आप नकली करेंसी और असली में कैसे अंतर देख सकते हैं. Very briefly, at least there are 7 to 8 features. Yeah, that's right. Yes. 7 to 8 features in a genuine currency note, wherein you can actually actually feel. One is the watermark. बैंक में जाकर भी खुद भी पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. One is of course कोई डाउट है तो. हाँ, of course. Watermark. Yes, many other features are there, and RBI, of course, as you said, it comes up all the time with the guidelines and एक चीज ये नोटिस की गई कि जब से ये हुआ है, ये नए नोट हैं, तब से फेक करेंसी छपना बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि वैसे जो न्यूज होती बहुत कम आती है हमारे पास. And in fact, it's very interesting to note here that it's not only about the normal people, even the visually impaired people. जी. The features are there wherein
they can also make out a difference between the fake and the genuine currency. Even RBI campaigned for that also, so that True. visually impaired also they can also identify whether it is fake or just touching that also. That's right. So next caller is Kanta from Gurugram. Kanta. हेलो Hello. जी, प्रश्न पूछिए आपका। जी सर, जो ये केवीपी लेते हैं ना जी, किसान विकास पत्र खरीदते हैं जी, ठीक है। और एनएफसी खरीदते हैं जी, तो इनके बारे में तो वहाँ जो टैक्स का फॉर्म नहीं भरवाते 15 का, तो ये इस पर टैक्स लगेगा 15H का। ओके, वो ठीक तो है। बैंक में तो भरवा लेते हैं। हाँ, ठीक है, ओके। देखिए, ये स्मॉल सेविंग्स का एक जो हमारा इनकम टैक्स के अंदर में एक लिमिट है कि आप कहाँ पे, ये उसी का पार्ट है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी जो है, तो जो 1.5 लाख तक का आपकी जो सेविंग्स हैं उसमें जो कि टैक्स के बाहर चली जाती है, उसका तो ये कोई इश्यू नहीं है। दूसरे ये जो 15G 15H भरवाया जाता है कि इससे जो आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी वो आपके टैक्सेबल दायरे में तो नहीं आएगी, तो उसके लिए आपको डिक्लेयर करना होता है कि आपकी ओवरऑल इनकम में अगर यहाँ से जो इनकम होगी, जैसे बैंक्स में यूजुअली वो इंटरेस्ट रेट के लिए होता है, अगर आपके इंटरेस्ट इनकम 10,000 तक तो उसके ऊपर नहीं लगता, बट अगर उसके बाद जो इनकम है और आपका टोटल इनकम जब कैलकुलेट होगी तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा जिस कैटेगरी में आप आएंगे। सो बैंक्स आपसे डिक्लेयर करवा लेते हैं कि मेरा इनकम में नहीं आता, और अगर आता है तो फिर भी आप बता देते हैं, फिर आपका टीडीएस वहां पर वो डिडक्शन हो जाता है। One more thing, I think Harveer ji is a point of difference is that this NSC and KVP, what he was talking about, the entire amount, I think it gets credited to the investor, as in there is no TDS deduction in this. It's all exempt, I believe. So you have to file the ITR, the income tax return, to reclaim if at all any TDS is deducted. No. But in this case, but if you are investing more than the limit which is provided under this income tax yes, to you on savings, so definitely then you have to be liable to tax to that income because it becomes your additional income. Right. जी, थाने से हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं। हेलो जी, राजेश जी, आपका सवाल क्या है? जी नमस्कार, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। मुझे पूछना है कि प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए 1 लाख रुपए तक का चेक मांगा जाता है, इस बारे में आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है? ओके, वेल राजेश जी, इस बारे में ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपका सवाल है। हाँ, बट इस तरह से 1 लाख का चेक तो नहीं जरूरत है आपको। एक तो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है और एक मिनिमम आप ये खोल सकते हैं, तो बट ये कोई कंडीशन नहीं है। मे बी सम पर्टिकुलर बैंक आपको कह रहा है, बट वो आपको इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये इसमें एक्चुअली ये होता है कि जैसे कुछ लोग क्रेडिट कार्ड की डिमांड करते हैं, तो अगर उनकी जो पिछली हिस्ट्री सही नहीं होती तो उनसे एक एफडी के रूप में ये अमाउंट लिया जाता है। दैट इज, बट इसको आप बैंक अकाउंट की ओपनिंग से नहीं जोड़ सकते। नहीं, वो दैट इज बिकॉज क्रेडिट कार्ड तो आपका फिर उसके बाद का रिक्वायरमेंट है ना, दैट इज सेपरेट सर्विस। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर आप 5,000 10,000 वट एवर इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द बैलेंस मेंटेन इनटू द अकाउंट, जिस तरह का अकाउंट आप खोल रहे हैं उससे आप खोल सकते हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक वट एवर वाज टॉकिंग अबाउट ऑफ द बैंक डिमांडिंग 1 लाख रुपीज चेक, probably they are also trying to pull in the investment in the form of an FD or something. This has been the trend with the private banks mostly FD की तौर पर। Yes, that is right. So our next caller is Vinod from Delhi. Vinod. हेलो जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सवाल पूछिए। मैं एक सभी जी से मेरा एक सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानना चाहता हूँ, इसको कैसे, इसकी ज्यादा जानकारी कहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं? और जी देखिए, ये स्टेट का जो किसी भी राज्य का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वहां से आपको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है उसका बहुत मेन स्ट्रीम में उस तरीके से खेती नहीं होती। बट ये आपको देखना पड़ेगा, शायद हरियाणा ने कुछ प्रमोट करने की कोशिश की है और गुजरात ने भी कुछ उस तरीके का, वहां की गवर्नमेंट का कुछ
उसके लिए सपोर्ट है। वहाँ उनके जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं उनके वहाँ से आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। और अन्य खबरों पर नजर डालते हैं तो चीन के निर्यात में आई तीव्र बढ़ोतरी और अमेरिका में बढ़ती हुई मुद्रास्फीति तथा ब्याज दरों में वृद्धि की आशंकाओं के बाद रोजगार के मुद्दे पर देखे गए सकारात्मक असर के चलते एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखा गया। जापान का निक्केई 225 और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.3% लाभ में रही। वहीं दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.1% की मामूली वृद्धि हुई, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। उधर हांगकांग के हिंग सेंग में आज 0.8% की गिरावट हुई। यूरोपीय शेयर बाजार अंतरदिवसीय कारोबार के दौरान लाभ में चल रहे थे। लंदन के FTSE 100 में 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि फ्रांस का कैक 0.8% चढ़कर और जर्मनी का डेक्स 1% के लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज कारोबार में 41 पैसे की गिरावट पर रहा और 79.66 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.26% टूटकर 106.35 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। And moving on to oil now, oil prices today dropped to hover near multi-month low as recession fears hurt demand outlook. The crude prices also fell amid data pointing to a slow recovery in China's crude imports last month. Crude oil prices declined more than 1%. Brent crude was trading at $93.90 per barrel, while the WTI crude prices was at around $88 per barrel. Harveerji, this is almost unprecedented if we look at the circumstances under which this is coming. $93 from the highs of almost $130 only some time back. And also there are fears of recession as the story and as reports are coming in recession in the Western developed economies and also the developing economies. So do you see the price holding up for some more time, or is it going to be another kind of a decline that it comes down to like 80 or 85 or something like that? No, actually there is some apprehension and there's some indication that some big economies may go into recession, and this decline of the price is basically due to maybe they may be seeing a lower demand in the market in coming days. Yeah, that is the reason. But it is, for a country like India, it is a very good thing because we import more than 85% of our requirement of oil from abroad. So prices goes down, it will reduce inflationary pressure on us in our country. So maybe we have to see in coming days how this economy really moves. If but IMF and all reduce basically the growth prospects of the global economy and weak economies also. So there's some sign that there may be less demand. That's why this oil market is reacting to that. और सोने पर नजर डालें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना आज 345 रुपए की बढ़त पर रहा और ये 52,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1,020 रुपए ऊपर चढ़कर 58,385 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,800.40 पर और चांदी भी बढ़त के साथ $20.25 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। हरवीर जी, सोने के बारे में क्या कहेंगे? सोना देखिए, अभी तो जिस तरीके से मार्केट में थोड़ा बहुत डिमांड निकलती है उसके हिसाब से मूव करता है, बट अभी मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़े ऑप्शन के रूप में ये आ रहा है, बिकॉज पिछला अगर ट्रैक देखें पिछले साल 2 साल का, उसमें कोई बहुत बेहतर रिटर्न गोल्ड में नहीं मिला है। So it depends on the demand and supply. But it's still holding its ground. 52,000, 50,000, 51,000. It never come down. No, but you have seen where it has come down from at this level. All right. So thank you so much, Harveer ji, for joining us here and giving our listeners that much more information, answering to their queries. Thank you so much. Thank you. और चलने से पहले एक बार श्रोताओं को मुख्य समाचार फिर से सुना दें। घरेलू शेयर बाजार में वैश्विक शेयर बाजार के मिले जुले रुख के बीच 0.5% से अधिक की बढ़त। सेंसेक्स 58,800 अंक के ऊपर और निफ्टी ने 17,500 अंक के स्तर को पार किया। डॉलर के मुकाबले रुपया 41 पैसे कमजोर हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $94 प्रति बैरल के आसपास। Domestic stocks rise more than 0.5% amid positive global cues. Sensex closes above the 58,800 points. Nifty reclaims the 17,500 mark.
Rupee weakens 41 paise against the US dollar, and Brent crude price declined multi-month low to hover around $94 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye till we meet again the next time. Namaskar. Market Mantra.